Hello, dear students. Today we are going to talk about some specific kind of problems in SHM which have springs and also involve constraints. So we have noticed that these type of questions can be tricky for a number of students, and that is why I am making this video to help you all out. So पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं. क्या होता है अगर एक सिंगल स्प्रिंग हो? If you have this kind of system, you have one spring. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास m इस पे सस्पेंड कर रखा है. जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो थोड़ा इलोंगेटेड होगा. वी कैन जस्ट राइट इन इक्विलिब्रियम के एक्स नॉट, लेट से इलोंगेशन है तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स के एक्स नॉट लगेगी और वेट एम जी लगेगा. तो के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू एम जी एंड एक्स नॉट विल बी इक्वल टू एम जी बाई के. बट when we displace it slightly, let's consider it is at a displaced position from equilibrium. This is x. So at displaced or at general position, we can say at displaced position, the FBD will look somewhat like this. So there will be k x naught, तो पहले से था k x naught plus x हो जाएगा और mg. So the net restoring force, that is what we are interested in, कि ये मीन पोजीशन की तरफ जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की फोर्स लगती है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितनी है. तो इस पर्टिकुलर केस में वी विल जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. वो माइनस के एक्स इसलिए आता है बिकॉज हमने डिस्प्लेस नीचे किया और फोर्स ऊपर लग रही है. तो अभी तो ये माइनस के एक्स नहीं दिख रहा है या के एक्स भी नहीं दिख रहा है. मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो के एक्स दिखना चाहिए. So we can write F restoring is equal to kx naught plus x minus mg. That is the net force, right? So we already know from the equilibrium position that kx naught is equal to mg. So kx naught और mg cancel करने के बाद देखो दिखने लगेगा kx naught minus mg cancel हो जाएगा और बचेगा सिर्फ kx. So that is the magnitude of restoring force. And now you can make it equal to m omega square x, or you can even directly write time period is 2 pi root m by फोर्स कांस्टेंट k. सो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है. दैट इज द फॉर्मूला 2 pi root m by फोर्स कांस्टेंट. सो 2 pi root m by k, that will be the time period. Now we could have trimmed some steps in this. So we can alternatively just write the restoring force directly. What happens ki at equilibrium the forces are always balanced. तो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने को अगर कॉज कंसिडर करो तो एज एन इफेक्ट जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी वही रिस्टोरिंग फोर्स होती है. तो कॉज किसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ इस एक्स को. ये कॉज है, एक्स नॉट कॉज नहीं है. एक्स नॉट तो पहले से था. तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप समझो यहाँ पे, और एक्स कॉज है तो इसके इफेक्ट में जो फोर्स आएगी वो डायरेक्टली के इंटू एक्स होगी. वी कैन से दैट दिस इज के इंटू एक्स एक्स्ट्रा, एक्स नॉट के अलावा जो एक्स है. सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स कैन डायरेक्टली बी रिटन एज एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स. एंड फ्रॉम दिस वी कैन डायरेक्टली राइट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m by the force constant. So whatever is the coefficient of this 2 pi root m by k. ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू प्रॉब्लम्स. 3 प्रॉब्लम्स वी विल सी स्पेसिफिकली, जिसमें नोटिस करेंगे कंस्ट्रेंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. हियर वी हैव अ पुली, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है. तो लेट्स कंसीडर एन आइडियल पुली. There is a spring and the block is suspended like this. So it has mass m. Let's consider that it is in the equilibrium position.
सो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने अल्टरनेटिव मेथड में देखा, आई मीन। इसको एक्स डिस्प्लेस करने के बाद, इफ वी डिस्प्लेस इट बाय एक्स, तो क्या होगा? दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो उस बॉडी का मीन पोजीशन से होगा जो बॉडी आपका एसएचएम परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे वो ब्लॉक एम है, इसका टाइम पीरियड हमें ढूंढना है। सो इफ वी डिस्प्लेस इट बाय एक्स, इफ यू रिमेंबर अ बिट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो यू नो दैट कि रस्सी की लेंथ फिक्स्ड होती है, ये रस्सी है, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ तो फिक्स नहीं होती, ये स्प्रिंग है। तो जब ब्लॉक नीचे आएगा तो पुली इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, पुली भी नीचे आएगी, पुली भी उतना ही नीचे आएगी जितना ब्लॉक नीचे आएगा। तो पुली नीचे आएगी बाय एन अमाउंट एक्स। तो इफ द पुली कम्स डाउन बाय एन अमाउंट एक्स, लेट्स कंसिडर दिस इज कमिंग डाउन बाय एन अमाउंट एक्स। तो यहाँ पे लेंथ कितनी बढ़ी? एक्स बढ़ी। यहाँ पे लेंथ कितनी बढ़ी? एक्स बढ़ी। तो कुल मिला के टोटल एक्स्ट्रा लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? 2x इंक्रीज हो गई। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होगा? अगेन रिमेंबर, रस्सी यानी कि स्ट्रिंग में लेंथ चेंज नहीं हो सकती, लेंथ चेंज होगी जो भी, वो स्प्रिंग में ही होगी। तो पूरा का पूरा 2x इलोंगेशन स्प्रिंग में ही होगा, यानी कि स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाई 2x। व्हेन स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाई 2x, तो यहाँ पे लगने वाला टेंशन, या इसको एफ कह लेते हैं, टी टाइम पीरियड से कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो दिस एफ विल बी k into 2x or 2kx। here also f is equal to k into 2x। तो यहाँ पे टेंशन f और यहाँ पे टेंशन f लग रहा है, दोनों साइड सेम टेंशन लगेगा, आइडियल स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 2f होगा। तो दैट विल बी 4kx। so that basically means that our time period will be how much? Time period is 2 pi root m by the constant that is with x, it is the coefficient of x। ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है उसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4k है। तो अगेन कौन सी फोर्स लेनी है हमें? जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उस पे लगने वाली फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स, और उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। लेट्स लुक एट another example। so now we have this one। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग डिफरेंट पोजीशन में, दैट्स द ओनली डिफरेंस। फुली आइडियल है, ये ब्लॉक का मास m है। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड इफ दिस ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय सम अमाउंट। तो रिमेंबर द स्टेप्स, you just displace the block by some amount x। now if the block gets displaced by some amount x, ये पुली से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, ये पुली से साइड के थ्रू कनेक्टेड है। तो pulley will come down a bit for sure, how much exactly that we have to see। so it will come down a bit like this। now if you pay attention, you can see that the block has gone down by x। since the block has gone down by x, this side of the string and this side of the string, you have two sides, right? So this whole x will be distributed equally on both sides, because when you pull this down, then
the length here decreases by, let's say, this side of string decreases by x dash, and this also decreases by x dash. And total decrease here is the increase here. So that's why 2x dash is equal to x. And hence x dash is equal to x by 2. So here now the spring force will be F is equal to kx, that kx dash, because x dash is the elongation. So kx dash, that is kx by 2. Now if here the tension is F, here the tension will be F by 2, and here also the tension will be F by 2. So on the block, what force is acting? That is half of this kx by 2 divided by 2. So that means kx by 4. And hence, just a minute. If we use the same logic, the time period will be 2 pi root m divided by k by 4. That is 2 pi root 4m by k. Now these were the basic ones. Let's take a question which is a bit more challenging. So let's consider this one. So we have 3 springs and 2 pulleys in this question. Let's say this is K1, this is K2, and this spring right here, this is K3. And here we have our block. So same logic again, if the block is displaced from equilibrium position by an amount x, what will happen to the 3 springs? Those will get elongated somewhat, right? So basically, when this comes down by an amount x, so that x gets distributed over all the 3 springs. Let's say elongation in K3 is x3, in K1 it is x1, in K2 it is x2. So what we can say is that x1, see, one important point to note here is that the block is directly connected to this spring and also to this spring, but this one is indirect. So if this has gone up by an amount x2 here and also x2 here, its contribution to this pulley will be 2x2, and hence it will cause 2x2 change in the length of the red string. So pulley will go up only by x2, but the length of the string, red string, will change by 2x2. So basically, x3 has a single contribution, x1 has a single contribution, but x2 has a double contribution. So that is equal to the total displacement of the block, which is x. Now, let's talk about the forces. So here we will have F is equal to K3, X3. Here we will have F is equal to K1, X1. And here we will have F is equal to K2, X2. Now, since this whole string,
let me highlight it with green color now. This whole string, this is a single string, so tension should be same. So K3 X3 should be equal to K1 X1, but this one is different, and you can clearly see that this F has to be actually equal to twice of these two, F plus F. So actually, this one we should write is 2F. Now, we can easily write from here X3 is equal to F by K3. X3 is equal to F by K3. X1 is equal to F by K1. And X2 is equal to 2F by K2. And we already have 2X2. So 2 into 2F by K2. That is equal to X. Now, if we just take F common here, we can get F as a function of X, which we wanted. So 1 by K3 plus 1 by K1 plus 4 by K2 is equal to X. यहाँ से फिर you can just take the LCM, and that will lead to K3, K1, K2, and first term here will be K1, K2, then K3, K2, then 4, K3, K1 is equal to X. So basically F is equal to K3, K1, K2, all that into X divided by all this in the denominator. So time period will be very easy now. 2 pi root m by all this coefficient of X, all this, all this. So that will be, I'll just copy this. So this divided by this, and this will go to the numerator ultimately. So that will be your answer. You can simplify it. So I hope you understood and enjoyed. That will be all. I'll see you next time.